बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है लिवर के रिलेटेड है, जिसमें लिवर सिरोसिस का नाम आपने सुना होगा। तो लिवर सिरोसिस जो है ना, इसकी आज हम डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो देखेंगे। लिवर सिरोसिस जो है, सिरोसिस बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें लिवर के जो नॉर्मल फंक्शनल सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं एंड दीज आर रिप्लेस्ड विद द स्कार टिश्यूज। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि लिवर में क्रॉनिक अगर हम देखें तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, या कोई इन्फेक्शन का जो है इशू हो सकता है, और उसकी वजह से इसके जो नॉर्मल सेल्स हैं जिनको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं, वो उनके ऊपर रीजनरेशन के प्रोसेस के दौरान स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली एक स्टेज आती है कि जिसमें ये इतना हार्ड एनफ हो जाता है कि लिवर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सिरोसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, और इसमें अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और कुछ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेज और जेनेटिकल कुछ इश्यूज जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो सिरोसिस जो है, इसको अच्छी तरह समझने से पहले जरूरी है कि हम पहले लिवर जो है ना, इसके बारे में, इसकी एनाटॉमी के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में अपना जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर लें। तो एज पर यूजुअल प्रैक्टिस कुछ इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे, और इसके एंड पे जाके मैं लेक्चर जो है वो डिलीवर करूंगा। तो सबसे पहले जो लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन कर ली है, वो काइंडली अपनी प्रेजेंस जो है उसको शो करें। चैट बॉक्स के अंदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम लिख के इसको एंटर करें, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाए। और इसके साथ ही मैं इसका एक वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो शुरू करता हूँ, और इसके साथ साथ जो लोग इसमें शामिल होते जाएंगे उनको मैं एडअप कर लेता हूँ, और बाद में जो इसका बाकायदा लेक्चर है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो आप काइंडली इसको जरा गौर से इस वीडियो ट्यूटोरियल जो है उसको सुने। Human anatomy, the liver. This video illustrates one of the most used internal parts of the human body, the liver. One can understand how the liver functions and aids the digestion of food in humans, apart from it producing vital nutrients and helping in the excretion of waste material from the body. The liver is the largest organ in the human body. The liver alone weighs about 1.5 to 3 kilograms in the body. The liver occupies much of the upper right quadrant of the abdomen, to the right of the stomach and immediately below the diaphragm. The liver is divided into two unequal lobes, a large right lobe and a smaller left lobe. The liver plays a number of vital roles, such as metabolizing the breakdown, products of digestion, and detoxifying substances that are harmful to the body. The liver also provides essential energy-producing substances and supplies vital vitamins, including iron, vitamin B12, and copper. The liver controls the production and excretion of cholesterol and metabolizes alcohol into mild toxin. It also performs many important functions, including storing iron, maintaining the hormonal balance, producing immune factors to fight infections, regulating blood clotting and producing bile. The hepatic portal veins, which are blood vessels that carry blood from the gastrointestinal tract and spleen to the liver, pick up nutrients and toxins from the stomach and intestines for processing. The hepatic ducts and gallbladder send the processed bile to the duodenum, which is about 25 centimeters long and a C shape.
The stomach opens up into the duodenum through a pyloric sphincter, a muscle that acts as a valve that controls passage of food from the stomach into the small intestine. The abdominal aorta and hepatic veins supply and return blood to the liver. One of the most important functions of the liver is to produce bile. This digestive juice dissolves fat into watery contents, much like detergents that dissolve grease from a frying pan. This juice is stored in the gallbladder between meals. During meals, it is squeezed out of the gallbladder through the bile ducts and into the intestines to mix with the fat in the blood through the bile ducts. When food, medicines, liquids, etc. are consumed and digested, the cells within the liver that contain a number of powerful enzymes break them down into many toxins. Ammonia, a toxin product arising from the digestion of proteins, is converted into a less toxic urea by liver. During exercise, the liver quickly breaks down stored glycogen into glucose, which is released into the bloodstream to be used by muscles as a source of energy. Another function of the liver is to make cholesterol and other fats that are needed by the body. Maintaining a healthy digestive system is essential for the health of the liver and other organs so that they can continue to perform their daily tasks that are vital to the overall health and well-being of a person. If you haven't yet, please subscribe to our channel, eLearning, for the latest on high-end 3D anatomy videos. The hepatic system सेकंड ट्यूटोरियल है भाई, इसको गो थ्रू करते The हैं. hepatic system consists of the liver and all functionally related structures. The liver is unique among the abdominal organs in having a dual blood supply, the hepatic artery and the portal vein. Terminal branches of these join to form common capillary beds. Thus, a mixture of venous and arterial blood bathes the liver cells, also known as hepatocytes. The functional units of the liver are cylindrical structures called lobules, of which there are approximately 50 to 100,000 in the liver. Each lobule is organized around a central vein that empties into the hepatic vein, and from there into the inferior vena cava, which is a large vein that brings blood from the lower half of the body to the heart. As blood travels through the liver, cells called Kupffer's cells remove waste products such as bacteria, old and defective blood cells, and other foreign material. The breakdown of defective red blood cells results in the formation of a pigment called bilirubin. The hepatocytes remove bilirubin from the blood and modify it so it can be secreted into adjacent small bile ducts called bile canaliculi. The bile canaliculi pass the bilirubin along to the common bile duct, where it is carried to the duodenum. At the duodenum, muscle tissue called the sphincter avati regulates the flow of bile into the duodenum. When this sphincter is closed, bile moves back into the common duct and the gallbladder, where it is stored. The liver has three essential functions. Bile formation. Bile is formed in the hepatocytes. Bile is essential to the elimination of bilirubin because the bile transports the conjugated bilirubins. Once bile has been released into the duodenum, it aids in the digestion of dietary fats and fat-soluble vitamins. Glucose metabolism. The liver converts glucose into glycogen, which it stores in the hepatocytes. Subsequently, the glycogen is converted back to glucose and released as needed into the bloodstream to maintain normal levels of blood glucose. The liver can also synthesize additional glucose, a process called gluconeogenesis. Ammonia conversion. Gluconeogenesis results in the formation of ammonia as a byproduct. Ammonia is very toxic to body tissue.
so the liver removes it from the blood quickly and converts it to urea, which is excreted by the kidneys. Intrahepatic biliary diseases disrupt the flow of bile through the liver, causing cholestasis, a stoppage or slowing of bile flow, and biliary cirrhosis. Bile is unable to drain from hepatocytes and enters the ductal system to drain into the duodenum. The liver attempts to repair itself by forming new bile routes. To accommodate the drainage of bile, the liver becomes enlarged. As the flow of bile continues to be impeded, the liver takes on a green hue due to bile buildup. Cirrhosis is the end stage of chronic liver disease, when much of the functional liver tissue has been replaced by fibrous tissue. Primary biliary cirrhosis involves inflammation and scarring of small intrahepatic bile ducts, portal inflammation, and the onset and progressive scarring and destruction of liver tissue. The liver becomes enlarged and takes on a green hue because of the accumulated bile. The cause of primary biliary cirrhosis is unclear, although an autoimmune mechanism is suspected. Secondary biliary cirrhosis results from prolonged obstruction of the extrabiliary tree, that is, stones in the gallbladder, leading to liver enlargement and bile accumulates due to the obstruction. Patients with secondary biliary cirrhosis may benefit from surgical procedures designed to relieve the obstruction. Alcohol-induced cirrhosis has 3 stages. Fatty liver disease is a condition characterized by triglyceride accumulation in the hepatocytes. The liver becomes yellow and enlarges owing to excessive fat accumulation. This stage of alcohol-induced cirrhosis is reversible once alcohol intake has stopped. Alcoholic hepatitis, the second stage, is characterized by the inflammation and necrosis of liver cells. This stage of the illness is sometimes reversible. Cirrhosis itself is the final, irreversible stage of alcoholic cirrhosis, in which dead liver cells are replaced by scar tissue, leading eventually to liver failure. Scarring continues, and the liver begins to shrink as fibrous tissue replaces normally functioning liver tissue. This leads to portal hypertension and liver failure. Portal hypertension is excessively high pressure in the portal vein. It develops when resistance to blood flow into or through the liver is increased because of fibrosis and scarring of the liver. For example, due to cirrhosis, blood begins to back up, leading to venous dilation in the esophagus and the legs, and even the rectum. At the same time, blood pressure increases in the portal venous system. Blood that normally enters the liver via the portal vein begins to bypass the liver, depriving the hepatocytes of their ability to perform essential functions. Ascites is the accumulation of fluid in the peritoneal cavity, and is one major result of portal hypertension. The blood that bypasses the liver is diverted to abdominal peritoneal vessels. Due to increased capillary pressure, fluid leaks out and into the peritoneal cavity. In response, the body releases ADH, or antidiuretic hormone, and aldosterone. ADH conserves fluid by promoting reabsorption of water by the kidneys, and aldosterone works to increase the amount of sodium retained, and thus increases water retention. Sodium and water retention increases, and fluid accumulation in the peritoneal cavity builds up even further. Often, there are no symptoms of cirrhosis until the disease is far advanced. One symptom is nutritional deficiency. As the flow of bile into the duodenum decreases, the small intestine is less able to digest nutrients. Another symptom of cirrhosis is hepatocellular jaundice. Jaundice is a coloration of the skin, either yellow or greenish yellow, resulting from the abnormal elevation of the bilirubin concentration in the blood. Hepatocellular jaundice is the type of jaundice caused by the inability of damaged liver cells to clear normal amounts of bilirubin from the blood. Bilirubin also seeps into the person's urine, turning it pale and frothy, while the bilirubin level in stools is reduced. As a result, stools turn pale. Liver disease leads to the progressive scarring and destruction of liver tissue, the final stages of which are called cirrhosis. In cirrhosis, the flow of blood and bile is obstructed, leading to portal hypertension, resulting in ascites, nutritional deficiency, and hepatocellular jaundice.
अच्छा, फिर 2 ट्यूटोरियल्स हमने ले लिए हैं, तो मैं तीसरी की तरफ मूव करता हूँ। इसमें लिवर के फंक्शंस जो है इनके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। जी, The liver, your heaviest organ, weighing in at around 1.5 kilograms, has 500 vital functions. Incredibly, it can maintain normal function with only 30% of its cells in working condition. The liver consists of 2 main lobes, each of which is composed of thousands of lobules. In this video, we're going to focus on some of the liver's main functions. The liver plays an important role in filtering blood. At any given moment, your liver contains about 13% of your blood volume. Well-oxygenated blood from the heart flows downward through the aorta, which curves behind the liver. It then travels up into the right and left hepatic arteries. Blood takes the return trip from the liver to the heart by exiting the hepatic vein and entering the inferior vena cava. Blood also enters the liver through the portal vein. This blood comes from the gastrointestinal tract and contains toxins such as alcohol and drugs. The liver detoxifies the blood so that the blood leaving via the hepatic vein is free of toxins. However, your liver filters out more than just toxins from your blood. Red blood cells begin their life cycle in the bone marrow. They live around 120 days until they undergo hemolysis in the liver. Hemolysis occurs when Kupffer cells, which are macrophages residing in the liver, perform erythrophagocytosis on senescent red blood cells. These Kupffer cells also serve as part of your body's immune system. Kupffer cells make up 80 to 90% of your body's tissue macrophages and are activated when they sense bacteria or bacterial endotoxins. Upon activation, they release various products, including cytokines, reactive oxygen species, and nitric oxide, all to defend the body. You can also thank your liver the next time you get a paper cut. The reason why you don't bleed to death is thanks to clotting factors, which create a kind of natural band-aid. Many of these clotting factors are synthesized by the liver. Thanks to these clotting factors, when a blood vessel is broken, hemostasis, which is the process that stops bleeding, can occur. Your liver also plays a major role in digestion. It helps digest fats by synthesizing bile and helps you absorb vitamins and minerals. The gallbladder, a pear-shaped organ that sits under your liver, is a bile reservoir. Hepatocytes within liver lobules produce bile. Small ducts connect lobules to larger ducts, leading to the hepatic duct. The hepatic duct transports the produced bile to the gallbladder, which stores bile, as well as the duodenum, the portion of the small intestine closest to the stomach. Before a meal, your gallbladder is full of this bile, since it's just been accumulating without being released. After a meal, your gallbladder is much emptier. The bile released helps to digest and absorb fats and fat-soluble vitamins. Your liver is also critical to the absorption of certain vitamins and minerals, including vitamins A, C, D, B12, E, and K. Vitamin A is important for the maintenance of healthy skin, a healthy urinary tract, healthy lungs, and healthy intestines. Deficits also lead to dry eyes more prone to infections. Vitamin C is important for the health of your teeth and gums, as well as bone health and absorption of iron into blood. Vitamin D helps your body absorb phosphorus and calcium, which is essential for your bones. Vitamin B12 is important for nerve and red blood cell functions. Vitamin E is an antioxidant, protecting your body from free radicals. Finally, vitamin K protects your bones and helps your blood clot normally. Your liver also works in concert with your pancreas to maintain healthy blood glucose levels and keep your body appropriately energized. Maintaining healthy blood glucose levels is important because hypoglycemia, or low blood sugar, can result in these symptoms, while hyperglycemia, which can result from diabetes, can result in these symptoms. Waking up after a long night's rest, your body is in a fasted
condition and your blood glucose is low. To remedy this, the pancreas secretes the hormone insulin into the blood. When the insulin reaches the liver, it breaks down glycogen, a multi-branched polysaccharide, down into glucose, and it releases it into the blood, hence restoring normal blood glucose levels. Let's say you went to your grandma's house, and she had a delicious platter of baked goods. Your blood glucose levels are now going through the roof. Now, your pancreas released the hormone glucagon into your bloodstream. Once your liver senses the increased levels of glucagon, it starts absorbing the excess glucose in your bloodstream and converting it to glycogen. Storing it thus will help you survive the horrid few hours of starvation until you get home and dig into a tub of ice cream hidden at the back of your freezer. There are numerous other functions that the liver performs, but those were some of the major ones to remember. Hope you enjoyed this lesson. If so, please एक और पे वीडियो ट्यूटोरियल है और इसमें ज़्यादा जो है वो लिवर के फंक्शन के ऊपर जो है वो एम्फिसाइज किया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो किसी ने बनाई हुई है, इसको काइंडली आप गो थ्रू करें। There's a factory inside you that weighs about 1.4 kilograms and runs for 24 hours a day. This is your liver, the heaviest organ in your body and one of the most crucial. This industrious structure simultaneously acts as a storehouse, a manufacturing hub, and a processing plant. And each of these functions involves so many important subtasks that without the liver, our bodies would simply stop working. One of the liver's main functions is to filter the body's blood, which it receives in regular shipments from two sources. The hepatic artery delivers blood from the heart, while the hepatic portal vein brings it from the intestine. This double delivery fills the liver with nutrients that it then sorts, processes, and stores with the help of thousands of tiny internal processing plants known as lobules. Both blood flows also deliver the oxygen that the liver needs to function. The blood that is received from the intestine contains carbohydrates, fats, and vitamins and other nutrients dissolved in it from the food you've consumed. These must be processed in different ways. In the case of carbohydrates, the liver breaks them down and converts them into sugars for the body to use as energy when the filtered blood is sent back out. Sometimes the body has leftovers of nutrients that it doesn't immediately require. When that happens, the liver holds some back and stacks them in its storage facility. This facility works like a pantry for future cases when the body might be in need of nutrients. But the blood flowing into the liver isn't always full of good things. It also contains toxins and byproducts that the body can't use, and the liver monitors these strictly. When it spots a useless or toxic substance, it either converts it into a product that can't hurt the body or isolates it and whisks it away, channeling it through the kidneys and intestine to be excreted. Of course, we wouldn't consider the liver a factory if it didn't also manufacture things. This organ makes everything from various blood plasma proteins that transport fatty acids and help form blood clots, to the cholesterol that helps the body create hormones. It also makes vitamin D and substances that help digestion. But one of its most vital products is bile. Like an eco-friendly treatment plant, the liver uses cells called hepatocytes to convert toxic waste products into this bitter greenish liquid. As it's produced, bile is funneled into a small container below the liver called the gallbladder before being trickled into the intestine to help break down fats, destroy microbes, and neutralize extra stomach acid. Bile also helps carry other toxins and byproducts from the liver out of the body. So as you can see, the liver is an extremely efficient industrial site, performing multiple tasks that support each other. But such a complex system needs to be kept running smoothly by keeping it healthy and not overloading it with more toxins than it can handle. This is one factory we simply can't afford to shut down.
ये हमारी लास्ट आज की ट्यूटोरियल है, वीडियो जो है, और इसमें लिवर सिरोसिस जो है ना, इसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। पर इन टोटल हमने 5 वीडियोस जो है उनको इसमें शामिल किया है। जो फर्स्ट 4 थी डिफरेंट वे के थ्रू, इनके अंदर लिवर और लिवर के जो फंक्शंस हैं उनको हाईलाइट किया गया है। तो इसके बाद में मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करता हूँ। Hello friends, welcome to Intellect Medical, Learning Made Easy. If you haven't subscribed till yet, do subscribe our channel to get updates and notifications about my new videos. Today we will discuss about liver cirrhosis. It is a condition in which liver does not function properly due to long-term damage. This damage leads to replacement of normal liver tissue by scar tissue. This can be due to long-term damage by either alcohol, typically more than 2 to 3 alcoholic drinks per day over a number of years is required for alcoholic cirrhosis to occur, and also can be due to chronic hepatitis C or hepatitis B infection and many other causes. I will discuss all the causes with mnemonic in later part of this video. Now first about pathophysiology. The liver is formed by parenchymal, that is hepatocytes, and non-parenchymal cells. The walls of hepatic sinusoids are lined by non-parenchymal Kupffer cells. Activated Kupffer cells destroy hepatocytes and contribute to fibrosis. Other non-parenchymal cells are stellate cells in the perisinusoidal state. These are also called as cells or vitamin A rich cells. On exposure to inflammatory cytokines such as platelet-derived growth factor (PDGF) or transforming growth factor beta (TGF-beta), stellate cells undergo transition from quiescent to activated state. Activation of stellate cells is characterized by generation of large amount of collagen and other extracellular matrix, ultimately leading to liver fibrosis. As this fibrotic tissue builds up, it starts to compress sinusoids and central veins, leading to increased intrasinusoidal pressure, or sometimes called as portal hypertension. Now, the causes of hypertension can be remembered by a mnemonic ABCD mind. Keep this picture in mind for mind and remember as if a drunk person can't even say ABCD. A for alcohol, B for hepatitis B infection, C for hepatitis C infection, D for drugs which can be alpha-methyl dopa or methotrexate, P for primary biliary cirrhosis, I for autoimmune hepatitis, N for non-alcoholic fatty liver disease, and T for type 4 glycogen storage disease. Coming on to signs and symptoms. As we have already discussed in pathophysiology that how portal hypertension occurs in cirrhosis. Higher portal venous pressure pushes fluid in the blood vessels to tissues and across tissues to large open spaces like peritoneal cavity. That is why cirrhosis causes increased peritoneal fluid, a condition called as ascites, and can also result in congestive splenomegaly due to increased portal venous pressure. Also, due to high liver pressure, blood is diverted and leads to portosystemic shunt as blood follows path of least resistance and shunts blood from portal system to systemic circulation. These changes also causes increased renal vasoconstriction, which causes decreased filtration, ultimately leading to hepatorenal failure, where kidney failure follows liver failure. Also, this portosystemic shunt can cause esophageal varices, which presents as hematemesis. Now, the signs and symptoms which are due to liver cell failure. There occurs decreased detoxification by the liver, which causes accumulation of toxic metabolites like ammonia in the brain, leading to hepatic encephalopathy, and patients might develop asphyxia, where they have tremoring or jerky hands when outstretched. There also occurs decreased estrogen metabolism, which causes spider angiomata, often containing a central red spot and reddish extensions which radiate outwards like a spider's web. Palmar erythema and gynecomastia can also occur. As liver cells are damaged, albumin is decreased, which leads to peripheral edema and contributes to ascites as well. Decreased conjugation of bilirubin leads to yellowish discoloration of urine and sclera, that is jaundice. And clotting factors are produced less in damaged liver, causing coagulation disorder. जी, वीडियो ट्यूटोरियल जो है अभी ये हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैं प्रेजेंटेशन की तरफ आता हूँ और आप लोग जो हैं वो एक बार इंश्योर कर लें कि आप अपनी अटेंडेंस जो है इसको मार्क कर चुके हैं।
Cirrhosis is basically a condition in which liver does not function properly due to long term damage. तो cirrhosis जो है वो एक सिंगल डे में डेवलप नहीं होती, ठीक है। आगे मैं इसकी 3-4 स्टेजेस पे बात करूंगा, ठीक है। तो cirrhosis is basically the end stage of liver damage. This damage is basically characterized by the replacement of normal tissues by scar tissues. तो ये नॉर्मल और स्कार टिश्यूज भाई क्या है? नॉर्मल टिश्यूज जो है हिपेटोसाइट्स हैं जिनसे मिलके जो है वो लिवर बना हुआ है, और ड्यू टू इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस होगा लिवर के अंदर, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। 30% जो लिवर है वो सफिशिएंट है अपना 24 आवर्स जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और मेन फंक्शन जो है इसमें हमने देखे हैं कि ये ना सिर्फ कुछ चीजों का अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन जो है उसको टेम्पोररी एनर्जी रिजर्व के तौर पे स्टोर कर रहे हैं। गाल ब्लैडर जो है इसके अंदर बाइल को जो है वो स्टोर कर रहे हैं। बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है उनको अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम विटामिन्स और मिनरल्स पढ़ते हैं और उनके हम जब नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें ऑर्गन मीट्स, और ऑर्गन मीट्स के अंदर लिवर जो है वो उसकी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये स्टोरेज का काम आ गया। इसी तरह लिवर जो है वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री का भी काम कर रहा है, प्रोसेसिंग भी कर रहा है और चीजों को मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम से, हमने देखा यहाँ पे कि ब्लड जो है वो 2 साइड से जो है ना वो लिवर के अंदर एंटर हो सकते हैं। 2 सोर्सेज हैं ब्लड की एंट्री के, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि हार्ट से जो है वो लिवर में उसकी एंट्री होती है, और दूसरा ब्लड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, या बेसिकली आप जो स्टोमिक है इस वाले एरिया से बात कर लें, और इसमें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन दोनों ब्लड्स के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं, टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये टॉक्सिकेंट्स एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, फूड के थ्रू आ रहे हैं बॉडी के अंदर, वाटर कंटेमिनेटेड जो है इसका मेजर सोर्स हो सकता है। अब लिवर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने इनको डिटॉक्सिफाई भी करना है। तो पहला इसका काम हमने लिवर का देख लिया कि ये स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे काम करता है। दूसरा हम इसकी बात कर रहे हैं कि अब इसने डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करना है, और डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करने के लिए लिवर के जो सेल्स हैं इनके अंदर कुपर सेल्स हैं, ठीक है। कुपर सेल्स जो हैं, कुपर सेल्स जो हैं ये आपने देखा है कि फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो जब ब्लड जो है वो लिवर में से गुजर रहा होता है, और लिवर जो है किसी भी वक्त अगर देखा जाए तो लिवर के अंदर तकरीबन 10% ऑफ द ब्लड, टोटल ब्लड इन द बॉडी जो है वो लिवर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो एक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में से गुजर रहा होता है। और इसी तरह फिर सेकंड जो पोर्शन आप कह लें, पार्ट ऑफ ब्लड कह रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो 24 आवर्स जो है ना लिवर अपना काम कर रहा है, और इसमें जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसको वो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कुपर सेल्स हैं वो बेसिकली फेगोसाइट का काम करते हुए इसमें से जितने भी टॉक्सिकेंट्स हैं उनको अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। इसी तरह टॉक्सिकेंट्स की एक किस्म यहाँ पे लिवर जब एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, और इसके अंदर स्पेशली जब ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर उसके लेवल कम हो जाए, और जो स्टोरेज ग्लूकोज की प्रोडक्शन या फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स अगर उसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक है, मीन्स के या तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम ले रहे हैं और हमारा डाइटरी इंटेक का प्रोटीन और जो फैट है वो इंक्रीज कर गया, और अब ये वाली चीजें भी जो है वो बॉडी के अंदर डायरेक्टली मेटाबलाइज नहीं हो सकती। इनको भी अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जब तक ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती तो बॉडी के अंदर इनकी यूटिलाइजेशन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं हो सकती। बेसिकली प्रोटीन का काम जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, ये बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उनके अंदर इसका रोल आता है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर हम डाइटरी इनटेक इसका ज्यादा कर रहे हैं या किसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, तो फिर बॉडी के जो स्टोरेज सिस्टम है, बॉडी में जो टिश्यूज के अंदर प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है और फैट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है। इस वाले प्रोसेस में जिसमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है वो
फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज शुरू हो जाती है, इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पेशली जब ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन से प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन जो है उसका एंड रिजल्ट जो है वो हमें अमोनिया की फॉर्म में मिलता है। अब अमोनिया जो है ना, ये बॉडी के अंदर इसको हैंडल करना ये प्रॉब्लमेटिक है और ये ज्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, जबकि लिवर का काम ये भी है कि वो ज्यादा हार्मफुल चीज को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखेंगे कि लिवर जो है वो अपने जो इसका प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन का, इसको वो एक्टिव करेगा और उसके नतीजे में अमोनिया जो है ये यूरिया में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और यूरिया जो है वो बॉडी में फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, रीनल सिस्टम जो है उसके थ्रू इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है। इसके अलावा लिवर के अंदर जो है बाइल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और बाइल बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव कोलेस्ट्रोल है। और बाइल जो है ये कोलेस्ट्रोल कह लें कि उसको फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जितना ज्यादा बाइल प्रोड्यूस होगा उतना ही पीछे जो है वो जो कोलेस्ट्रोल है उसकी बॉडी के अंदर कमी होगी। यही बाइल जो है ये बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम पार्ट में जब इसको पोर किया जाता है तो वहां पे फैटी मील या इस तरह की जो स्टफ है उनकी डाइजेशन जो है वो उसमें वो अपना रोल प्ले करते हैं। ना सिर्फ डाइजेशन बल्कि फैट को एब्जॉर्ब करना या फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करना, ये भी इसका काम आ जाता है। ठीक है, तो ये भी भाई हमने एक देखा कि ये जो लिवर है ये हमें एनर्जी प्रोडक्शन में, अब इतने ज्यादा फंक्शंस हम इसके देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें लिवर के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं, तो वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो डीजनरेट होते हैं तो फिर उसका जो अपना सिस्टम है रीजनरेशन का वो एक्टिव हो जाता है। और इसके नतीजे में अगर ये सिचुएशन जो है वो क्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्रॉनिक जो है वो डीजनरेशन हो रही है, हम इसके जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल कंजम्पशन वाला इंडिविजुअल जो है वो अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है, या कोई ड्रग्स जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक बंदा यूज कर रहा है, तो फिर अल्टीमेटली वही जो सेल्स हैं वो स्कार्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा है यहाँ पे कि कोलेजन टिश्यूज में कन्वर्ट होंगे, कोलेजन जो है वो फाइब्रस टिश्यूज हैं, हार्ड टिश्यूज हैं, और अल्टीमेटली एक स्टेज आती है कि जिसमें लिवर जो है ना वो आपको इस फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाता है। तो सिरोसिस इज बेसिकली मोस्ट commonly caused by the alcohol consumption। और इसमें अगर हम वायरल साइड पे आ जाएंगे तो इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की, और ये जरूरी नहीं कि ये पाकिस्तान में इसका रेट हाई है, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। यूएसए के अंदर भी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो है वो काफी ज्यादा केसेस जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, जैसे विल्सन डिजीज का नाम शायद आपने सुना होगा, कि जिसमें कॉपर का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी सिरोसिस की जो डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे पिक्टोरली अगर आप देखें तो ये नॉर्मल लिवर है, और इसकी एक्सट्रीम राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये लिवर विद सिरोसिस है। तो इसका एक जो टेक्सचर आप देखें ब्रॉडली एक्सटर्नल, तो बड़ा फाइन किस्म का आपको एक टेक्सचर नजर आ रहा है, और जबकि सिरोसिस वाला लिवर जो है उसका टेक्सचर जो है वो आपको डिस्टर्ब फॉर्म में नजर आ रहा है। और जब हम इसको नैरोली देखें तो नॉर्मल लिवर के अंदर जो इसके सेल्स हैं जिनको हमने लोब्यूल का नाम दिया है, ठीक है, और एक लोब्यूल जो है भाई ये आप देखें कि एक